military spokesman Major General Babar Iftikhar has cleared the air regarding 3 issues that were circling around and creating noise. The first issue being the 2,600 kilometers long border between Pakistan and Afghanistan. At number 2, the talks with the Tehreek-e-Taliban Pakistan. And last but not the least, the Nawaz deal, the return of the former Prime Minister of Pakistan. यहाँ पे नंबर 1 जो सबसे पहला टॉपिक है 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है उसके ऊपर इशू चल रहा है बिकॉज 2017 के बाद से जब ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान ये फेंस को बनाएगा और इस फेंस को बनाने का मकसद भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, वेपन्स का इधर उधर आना, जो से इन्फ्लक्स ऑफ इंसर्जेंट्स जो था उसको रोकना, स्पिल ओवर मिलिटेंसी था उसको कंट्रोल करना, यानी ये वाले इशू से। तो इट वाज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको बनाया जाए, इस फेंस को खड़ा किया जाए। लेकिन 2017 में जब इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो तब से लेके अब तक अफगानी हैव नेवर बीन एबल टू फुली एडमिट द फैक्ट कि ये ज़रूरत है एंड इट शुड बी इरेक्टेड। They tried lots of things but nothing could work out and presently अब जबकि वो 94% almost complete हो चुकी है as has been told by the ISPR chief, तो अभी भी उनको इश्यूज हैं उससे। एंड रिसेंटली 2-3-4 वाक़यात हुए हैं कि इस फेंस को, बॉर्डर फेंस को ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो उसी को हाईलाइट किया गया जब सवाल पूछा गया उनसे कि what needs to be done in this regard. So he replied that we understand the gravity of the situation and we have conveyed our grievances to the authorities and the interim government at Kabul. तो तालिबान ऑफिशियल्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया एंड दे सेड दैट यस दिस इज एन इशू एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड थ्रू डायलॉग्स एंड विल बी डन सो। 2-3 बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके बयानात बड़े इंपॉर्टेंट मैन रखते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल कहार वाज द अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन, he made a very good point and he said that we understand recently a few incidents have occurred along the Durand line between Pakistan and Afghanistan and where the fence has been tried to be taken down. So lekin we understand and believe in diplomacy and in good talks to make friendly relations. तो ये तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव सी न्यूज़ थी। लेकिन 2 लोग हैं, तालिबान स्पोक्समैन ज़बीउल्लाह मुजाहिद and Taliban defense ministry spokesman Ismaeel Qasim, both have made strong statements in the past and even now because काबुल का जब टेक ओवर हुआ था उसके कुछ दिनों बाद ही ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आया था that Afghans are unhappy with the fencing and the fencing has separated people and divided families, ये उनका बयान था। and जो अभी इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने जो बयान दिया, he said Pakistan has no right to fence the border and create a divide. I don't know which divide are they talking about, but obviously they don't understand the gravity of the situation. Otherwise वो ऐसे बयानात ना दें। लेकिन यहाँ पे जो कमाल की बात है वो ये स्टेटमेंट है ISPR चीफ की, while emphasizing the importance being attached by Pakistan on this fencing, said martyrs' blood was involved in erecting this fence. The fence of peace, he termed it. The fence of peace will be erected and God willing, it will remain. Wow. Big statement. Anyway, 94% of the work on the project has been completed, he added. So this was the first issue and जिसको clear कर दिया ISPR की तरफ से कि yes, defense will be completed soon and there's no stopping that. Moving on to the second issue, the talks with the Tehreek-e-Taliban Pakistan, because Major General Babar Iftikhar, he stated that operations against TTP had recommenced after breakdown of talks over certain non-negotiable conditions. He used the word non-negotiable. तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो जब काबुल टेकर हुआ तालिबान का तो ये हवा चली कि शायद अब टीटीपी के साथ बातचीत हो सकेगी एंड वो निगोशिएट करवा सकेंगे। कोशिश भी हुई, बात भी हुए और 1 महीने का सीज़ फायर भी हुआ। तो 9 दिसंबर तक वो तहरीक तालिबान के साथ जब हमारा सीज़ फायर ख़त्म हुआ तो दे हैव वेरी ओपनली एंड वेरी ब्लंटली क्लेम्ड दैट अब तक के 70 जो अटैक्स हुए हैं वो उन्होंने करवाए। And since that period, after the ceasefire ended, the military spokesman for the first time publicly explained as to how the dialogue started. ये वही वाली मैं बात कर रहा हूँ, इसका background दे रहा था। अच्छा, वो कहते हैं going into the talks with these violent non-state actors. He termed them violent non-state actors. See, at the request of the Taliban government,
as a confidence building measure. Good enough, after 15th August, जब हुकूमत Pakistan had given a requirement to the interim government that the TTP should not be able to use the Afghan soil again to regroup. So, उस time it was in context to that. Anyway, the conditions were yet to be settled, but it happened, and now he said that the talks have failed, the operations have begun again, and they will not stop. He denied reports. This is a very important line because मुझे भी एक somehow यही perception बनी हुई थी बहुत से लोगों के अंदर भी ये है कि जी TTP के हमने during ceasefire या before that हमने शायद कुछ उनके जो कैदी थे उनको हमने release किया, but that's not true because he denied reports that some TTP fighters were released during the ceasefire. It's very important. Anyway, and moving on to the Nawaz Sharif deal. The Nawaz Sharif deal is very important because बड़ी एक हवा चली कि जी नवाज शरीफ वापस वतन लौट रहे हैं, and शायद कोई डील हो गई है, शायद कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने टिल्ट अपना उनकी तरफ कर दिया है या कुछ और, मतलब कोई भी डील, मतलब ये बातें काफ़ी ज़्यादा चलना शुरू हुई, बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. अच्छा, वो क्यों नहीं है? बिकॉज वापस तो उनको आना पड़ रहा है बिकॉज पासपोर्ट हमने उनका रीन्यू नहीं किया, वीज़ा जो एक्सपायर हुआ उसकी एक्सटेंशन बरतानिया ने नहीं दी उनको, तो ही मतलब वो तो बेचारे बीच में फंस गए, उनके पास ना इधर की जगह ना उधर की है, मजबूरी में उनको वापस तो आना पड़ना ही है. अब वो नून लीग वाले उसको कुछ भी बना दें, कुर्बानी बना दें या मतलब क्या कहें उसको, कुछ भी बना दें, लेकिन वो वैसा है कुछ नहीं, तो मजबूरी है वापस आना. लेकिन जनरल बाबर categorically denied that there was a deal in place for the former Prime Minister of Pakistan, and he said this is a baseless speculation. It's his own word. So there is no truth in that, and that was it that had to be shared with you guys.